Arunima? Arunima? Okay. Seems like microphone isn't working. Let me talk to Amir. Amir? Yes, sir. I couldn't take the class yesterday. So when can I take the class? This compensatory class? Sir, maybe over the weekend. Over the weekend? Or sir, Friday is free. Friday is free. What time? 3, same time. अच्छा 3 o'clock it's okay. So okay. ठीक है 3 o'clock का मैं schedule कर दूंगा हाँ? And we'll send that. Okay, sir. Okay, so in the last class, we had started talking about OALP, HELP. Unfortunately, I cannot write on this one. I do not know what to do with that one now. I cannot write here. Well, that's fine. Let me put up one PowerPoint slide. And maybe because I was showing you, wait a minute. Oh, but still I cannot write here. And if I have this, can I write here? Don't know. And ways to write. No, it's fine. I can speak out. Okay, so production sharing contract, or also called PSC. If you have a model for that one, so that is also called model PSC, that is MPSC. Okay, so what I'm going to talk about is, well, these terminologies that it's a kind of, you know, all these, and these things will come while we deal with these production sharing contracts. All these terminologies I have explained before, and B0, BG, all these things you know, okay? So I'm not going to talk about these terminologies, because by now you have a full idea about these terminologies. That I'm pretty sure. So now let's talk about HELP, that is a hydrocarbon exploration licensing policy that came in 2016. Okay. So let me sorry, let me show you the okay, but before that, let me finish this one. 4 main facets were of this policy. And that was, first is uniform license for exploration and production of all forms of hydrocarbon. Okay, where it is you know, conventional or unconventional, whether, you know, gas, oil, heavy oil. An open acreage policy. We will look at what is that. Easy to administer revenue sharing model,
And fourth one is, so as I said here, a revenue sharing model. Earlier it was profit sharing model. And then marketing and pricing freedom for the crude oil and natural gas produced. And these were done to enhance domestic oil and gas production, to bring substantial investment and generate sizable employment, enhance transparency, and reduce administrative discretion. So let me show you this health gadget that was, although it says 28 February 2019 that the gadget was published, but in 2016 it was already there. Now here it's too much in Hindi. Now let me go to the English section of this one. Okay. So this gadget, but before this gadget, also let me show you this one. This one, as you can see, that in the cabinet meeting on this was published on 10th March 2016. You can see this 10th March 2016. Okay. Before this HELP, what we had was NELP, and we will talk about those as well. But let us first look at HELP. Okay. So as I said, those four different main facets that I had put those in the slide. Here you can see that uniform license for exploration and production, open acreage, revenue share model, and market and pricing freedom. And then details were to some extent, okay, this is not all the details, okay. This is a kind of big picture that was given with in the cabinet meeting, right? So as it says, the uniform license will enable the contractor to explore conventional as well as unconventional, okay? And that unconventional includes CBM, shale gas, oil, tight gas, and gas hydrates under single license. Though, gas hydrate is not being produced, but it's still, that in the license, it is already there. Okay, that if you would be able to produce gas hydrates in future, then, licensing will be the same way. Now, as you can see that, here in this HELP, then there is a mention of open acreage policy, okay? And we will discuss this, what is open acreage. So basically, in open acreage, what you do is, in different parts of the country, you look at the data, and then you express your interest in those blocks, and then bidding is done. So we'll look at that one too. What is that open acreage policy and how it works? Will enable E&P companies choose the blocks from the designated area. Okay. Now, says the present fiscal system of production sharing. That means this was production sharing was before this HELP. Okay. Before HELP, what was called production sharing contract. Okay. And that was based on investment multiple and cost recovery production linked payment. Okay. So it was quite complicated. Cost recovery, as I have told you, this cost recovery, what happens is when you are going for exploration, you are investing a lot of money, right? And so in previous
production sharing contract, we will look at one of those, how NELP worked. So basically, companies or contractors were allowed for cost recovery before they could say that, okay, now, and that was 100% cost recovery. That means, let's say, if they found oil and gas and they are producing, let's say, 10,000 barrels a day, so they could put this entire 10,000 barrels a day to for their cost recovery. Okay, that means government was not going to get any money. Okay, till they really recovered the cost. That means 100% cost, and then when they make profit, that is when they are allowed. But now that system has been removed, and now you have what you call revenue sharing model. Okay. In fact, the earlier model was, for KGD6, okay, Krishna Godavari Basin, KGD6, Reliance was using that model. And so what happened is when they were doing this cost recovery, that is when all these issues came up, and then they were asked to for their account audit and things like that, but they did not allow, because you cannot government or agency cannot go and audit private companies. So there are so many issues came up from that production sharing model. Okay, so that, as we now change to what is called revenue sharing model. Okay, that you can see it's highlighted. The earlier contracts were based on the concept of profit sharing, where profits are shared between government and the contractor after recovery of cost. Okay, so under profit sharing methodology, it became necessary for the government to scrutinize cost details of private participants. When you say that I'm going to recover cost, then of course government is going to say, well, if you are going to recover a cost, then I need to see your see your account, how you are recovering that cost. Okay, and so that is what happened, that it became necessary for the government to scrutinize cost details of private participants, and this led to many delays and disputes. जो कि मैं अभी बोल रहा था ना, बता रहा था तुम्हें कि that is what happened. Many disputes were created because of this cost recovery. Yes, cost recovery was under NELP. Okay, so there is a question whether cost recovery was under NELP. So yes, cost recovery mechanism was under NELP. Okay, but then it has been now changed since 2016 to what is called a revenue sharing model. Okay, so under the new regime, the government will not be concerned with the cost incurred. Okay, तुम 100 रुपया खर्च कर रहे हो कि 1000 रुपया खर्च कर रहे हो, that is not what government is concerned is. The government is like, okay, if you are going to produce 10,000 barrels, how much you are going to share with me? That's it. So that is what, and will receive a share of the gross revenue from the sale of oil, gas, etc. ठीक है? So ये simple हो गया कि भाई, if you are producing 10,000, so tell me how much you are going to give me. Okay, government is going to ask, right? Or that is what sharing contract is. That is what you bid for. Okay, the government is not forcing, but that is what you are going to bid for. Let's say one company says I'm going to share 20%, another says I'm going to share 30%. Okay, so of course the government will say, well, this company is giving me 30%, so I'll give that bid to that person, that company. Yeah, so that is quite natural, isn't it? So that is what that became now revenue sharing model. Okay, good.
Okay. Where was I? Okay, this is in tune with the government's policy of ease of doing business. Okay. And then, of course, all this marketing freedom, the policy also provides marketing freedom for crude oil and natural gas use from these blocks. Okay. What does it say? Recognizing the higher risks and cost involved in exploration and production from offshore areas, lower royalty rates for such areas have been provided as compared to NLP. So we'll look at those. How much? अभी HLP का गैजेट के बारे में वो अभी हम लोग ये देख रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग का ये है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये हम लोग अभी HLP का जो कैबिनेट मीटिंग जब अप्रूव कर देता है तब जो है फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो ये कैबिनेट मीटिंग का जो है वो रेजोल्यूशन है, दैट मीन्स जो मिनिस्टर्स जो थे दे sit together and then they decide, okay, this is how it's going to be, right? और उसके बाद फिर आगे कैसे काम होगा, then गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह सब वो अभी दिखाते हैं, अभी we'll work on that. तो ये है, तो बेसिकली जो 2016 में जो कैबिनेट मीटिंग में रिजॉल्व हो गया कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हैव हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी. सो वंस दैट कैबिनेट मीटिंग गिव्स दिस kind of policy framework, तो उसके बाद जो है उस पे जो है डिटेल्स इसके बाद आते हैं, ठीक है. So look at this one. So recognizing the high risk, okay, all this lower royalty rate, ये royalty rate क्या क्या है, we'll look at those for such areas, especially the deep water and ultra deep water. Compared to NELP royalty rates to encourage exploration and production. A graded system of royalty rates have been introduced. वो भी देख लेंगे हम लोग कैसे graded है over a period of time, okay, in which royalty rates decreases from shallow water to deep water. Okay, जैसे जैसे deep water जाओगे तो तुम्हारा जो है वो royalty rates कम होते जाएगा, that is what it is. And ultra deep water. आमिर. Yes, sir. डीप वाटर का डेफिनेशन क्या है? Sir, any offshore area with depth greater than 1000 meter. हाँ, क्या बोल रहे हो? Sir, I think 1000 feet. Sorry, sir. 1000 feet? Yes, sir. कहाँ से तुमको नंबर मिल गया 1000 feet? इंडिया में ऐसा नहीं होता. Sir, around 400 meter I remember के. अच्छा, तो सब तुम जो है चेंज कर दोगे अपने आप, हाँ? So at the same time, royalty rate for on-land areas have been kept intact. तो जो NLP में था वही इसमें भी है. So that revenues to the state governments are not affected. Look at this. अगर on-land है तो उसका revenue जो है that goes to state government. लेकिन अगर offshore area है उसका जाता है सेंटर को, क्योंकि that is federal land, federal offshore. Offshore जो होता है वो सेंटर के पास होता है, ओके, लेकिन लैंड जो हुआ वो तुम्हारा स्टेट का हो गया.
On the lines of NLP, cess and import duty will not be applicable on blocks awarded under the new policy. This policy also provides marketing freedom. Okay, ठीक है, तो ये हुआ। अब एक और देख लो, ये देखो गैजेट जो अभी मैं दिखा रहा था, तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। इसमें देखो, इसमें क्या है कि बेसिन का जो कैटेगरी है पहले 4 होता था, तो उसके बाद अब इसको 3 टाइप्स कर दिया गया, कैटेगरी 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। अगर ओल्ड डेटा देखोगे, सो देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ बेसिन्स, लेकिन ये फरवरी 19 से जो है देयर आर ओनली 3 कैटेगरीज, ठीक है। इसमें देखो, टू इंक्रीज एक्सप्लोरेशन activities attract domestic and foreign investment in unexplored, unallocated areas of sedimentary basins and enhance domestic production of oil and gas from existing fields and promote ease of doing business by streamlining and expediting the approval processes. The Government of India hereby notifies the following policy reforms. तो पॉलिसी रिफॉर्म में देखो, पहला है कि कैटेगरी कितना किया, 3 कर दिया, ठीक है। 1 कौन सा है, बेसिन विच हैव प्रोवन हाइड्रोकार्बन रिसोर्स विथ एस्टेब्लिश्ड कमर्शियल प्रोडक्शन, जैसे कैम्बे बेसिन हुआ, ये कौन सा हुआ, कैटेगरी 1 हुआ, है ना, क्योंकि इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। कैटेगरी 2, बेसिन्स विच हैव कंटिंजेंट रिसोर्सेस which are yet to be converted to recoverable reserves and commercial production. तो अब ये देखना होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर एट दिस टाइम कि तुम्हारा बंगाल बेसिन को ये लोग कैटेगरी 2 में रखा है कि कैटेगरी 1 में कर दिया, दैट आई एम नॉट वेरी श्योर। बिंदन बेसिन, सो विल हैव टू सी व्हाट डीजीएच डज, ओके, क्योंकि वो बेसिन का कौन सा कैटेगरी में रहेगा, वो तो बेसिन का वो डीजीएच देगा कि ये किस कैटेगरी में है, ओके। ये पॉलिसी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 जो है, बेसिन विच हैव प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज विथ नो हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी एंड फ्यू एक्सप्लोरेशन इनपुट एंड डेटा, ओके। तो कुछ है जैसे कि गंगा वैली बेसिन है, तो ये तो कैटेगरी 3 में होगा, क्योंकि इस पे जो है हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी नहीं है, बट some wells have been drilled, हाँ? अब इसमें जो है the category wise list of sedimentary basins of India is at annexure 1, इसमें है, annexure में देखते हैं कि नहीं। Increasing exploration in unexplored or unallocated areas, इसके लिए जो है तुम्हें OLP किया गया था। तो देखो, unexplored areas will also include unallocated areas which have not been allocated to any entity for exploration and production, ठीक है। तो वो जो है unallocated और unexplored, हाँ। The policies as below are to be applicable prospectively, मतलब आगे, prospectively मतलब आगे की ओर, not retrospective मतलब पीछे की ओर हो जाता है, तो retrospective is a very bad thing. But anyhow, so this prospectively only to such areas to be allocated in future. Fiscal and contractual terms for areas in category 1 basin. So category 1 basin चूंकि वो producing है ना, already वो तो producing है basin. So there has to be some kind of financial implications ऐसे होने चाहिए कि government को benefit ज़्यादा मिले, and that is why you have all these. So let us look at that. The exploration blocks in category 1 basins will be awarded on the basis of international competitive bids based on exploration cum revenue sharing, ठीक है। तो ये जो exploration cum revenue sharing जो तुम बनाओगे, ओके, उसी पर जो है तुम्हारा, let me see, कुछ है,
Oh, I think I can draw here. Yes, I can write. Oh, good. ये तो अच्छा है. So, this is what you have: expression come revenue sharing. That is a very good point. Expression come revenue. For the purpose of revenue share, the bidder will quote, जो bid करेंगे ना, they will quote the percentage of revenue. जो अभी मैं बता रहा था ना, percentage में quote करना पड़ता है. Percentage of revenue कि कितना हम देंगे, to be shared with the government against lower revenue point and higher revenue point. ये एक जो है lower revenue point क्या होगा, higher revenue point क्या होगा, अब ये देखते हैं इसमें. If things become clear, it's all right. Otherwise, we will see. The lower revenue point is equal to $0.05 million of revenue per day. Okay, तो ये तुम्हारा लोअर रेवेन्यू पॉइंट हुआ. एंड हायर जो हो गया इज इक्वल टू $7 million per day. The revenue sharing ceiling at HRP will be set at 50%. Oh, देखो इसमें क्लियर कर दिया कि अगर तुम्हारा जो है 7 मिलियन अगर हो गया, ठीक है, अगर यहां से अगर 7 मिलियन अगर रेवेन्यू पर डे है, अगर मान लो कि तुम्हारा जो है कोई ऐसा ब्लॉक मिल गया where you are getting lot of production, okay, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि कहेगी ओके, अब जो है तो मुझे कम से कम 50% तो हमें दोगे ही दोगे. ठीक है, तो ये है. सी, दिस इज व्हाट you had this problem with retrospective tax. You remember that? जो कैन पर किसी ने पिछली बार मुझसे बात किया था ना, तो मैंने बताया था कि कैन ने जो है जो इंटरनेशनल कोर्ट में फाइल किया एंड दे वन द केस. तो अब इंडिया को पे करना पड़ेगा अबाउट $1.4 बिलियन. तो प्रॉब्लम यही था, ठीक है, कि उसमें जो है कोई हायर रेवेन्यू पॉइंट नहीं फिक्स था. कि अगर तुम्हारा भाई विंडफॉल प्रॉफिट, दैट इज आल्सो कॉल्ड विंडफॉल प्रॉफिट, राइट, कि अगर तुमने वेल ड्रिल किया और तुम्हें अचानक से जो है बहुत सारा ऑयल एंड गैस मिल गया, ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड. हाँ, तो वैसे में जो है दैट इज व्हाट दिस हैज बीन पुट, हायर रेवेन्यू पॉइंट. ठीक है, कि अगर 7 मिलियन से अगर ऊपर हुआ तो भाई मुझे जो है वो 50% जो है दे देना. सो फॉर इवेल्युएशन ऑफ बिड्स, नहीं, LRP एंड HRP नॉट डिसाइडेड बाय कंपनी. LRP एंड HRP जो है वो तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया. बेस्ड ऑन दैट अब वो क्या करेगा, कंपनी जो है, कंपनी विल टेल कि जो है हमें कितना, हम गवर्नमेंट को कितना देंगे, वो अपना परसेंट बोलेगा कि कितना हम देंगे. गवर्नमेंट बोलेगा, ये कंपनी बोलेगा कि बिड करेगा तो. ओके, फॉर इवेल्युएशन ऑफ बिड्स वेटेज विल बी एज अंडर. तो आप जब भी इवेल्युएट करोगे बिड को तो देखो मिनिमम वर्क प्रोग्राम का वेटेज है 70%. अगर तुम जो है कुछ जैसे कि कहो कि ओके आई विल ड्रिल सो मेनी वेल्स, आई विल ड्रिल आई विल डू दिस मच ऑफ साइस्मिक, हाँ बिडिंग में ही डिसाइड करते हैं. बट HRP एक फिक्स हो गया कि जो है अगर इससे ज्यादा अगर तुम्हारा रेवेन्यू होगा तो 50% तो दे ही दोगे. ठीक है, वो है, तो इसीलिए वो बाउंड्री फिक्स किया गया है. मिनिमम वर्क प्रोग्राम तुम्हारा 70% होगा एंड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है तुम्हारा जो होगा उसको 30% वेटेज. तो ये वेटेज कर दिया गया. अब इसमें जो है
जो तुम्हारा मिनिमम वर्क प्रोग्राम है, इन मिनिमम वर्क प्रोग्राम हाउ इट्स गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड। तो जितना तुम एक्सप्लोरेटरी वेल ज्यादा दोगे उतना तुमको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। एक कहा कि मैं 2 वेल ड्रिल करूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं तो सर 4 वेल ड्रिल करूंगा। तो जो है जिसको 4 वेल ड्रिल करेगा उसको तो डेफिनेटली जो है उसका वेटेज बढ़ जाएगा। और साइस्मिक सर्वे का है 20%, ठीक है। तो एक कहेगा कि हम 100 लाइन किलोमीटर सर्वे करेंगे, दूसरा कहेगा कि हम 50 लाइन किलोमीटर सर्वे करेंगे। सो ऑफ कोर्स जो 100 करेगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलना चाहिए। हाँ, सो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, तो मिनिमम वर्क प्रोग्राम वो बता, जब व्हेन यू आर बिडिंग फॉर सम ब्लॉक, that is what you are going to say, what is your minimum work program for that one. The time expected for performing seismic survey and completion of committed number of exploratory well will also be submitted by bidders. However, it will non-biddable item. ठीक है, टाइम फ्रेम कहेगा कि हम 1 साल में करेंगे, दूसरा कहेगा कि हम 2 साल में करेंगे। नॉन बिडेबल आइटम है, लेकिन तुम्हें बताना तो पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें बताना तो पड़ेगा कि 1 साल में करना चाहते हो कि 2 साल में करना चाहते हो। सकता है उससे तुम्हारा जो है उस पर मार्क्स का अंतर नहीं होगा, लेकिन तुम्हें बताना तो होगा। दैट इज व्हाट इट इज। Timelines for completion of MWP, that is minimum work program, will be 3 years for online. ठीक है, and shallow water blocks up to 400 meters of water depth. देखो आ गया, यहाँ पर डेप्थ आ गया। जो 400 मीटर तक जो है दैट इज कॉल्ड शैलो वाटर। 400 से 1500 तक डीप वाटर, एंड 1500 एंड बियॉन्ड वाटर डेप्थ दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा डीप वाटर। सबके लिए अलग अलग तुम्हारा टाइमलाइन है। ऑनलाइन है ब्लॉक, तो 3 इयर्स में तुम अपना मिनिमम वर्क प्रोग्राम जो कमिट किए हो यू कंप्लीट दैट। अगर तुम्हारा डीप वाटर है तो 4 इयर्स तुम्हारे पास टाइम है। अल्ट्रा डीप है तभी तुम्हारे पास 4 इयर्स का टाइम है मिनिमम वर्क प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, कहोगे कि हम इतना साइस्मिक करेंगे, इतना वेल करेंगे, तो दैट इज व्हाट योर मिनिमम वर्क प्रोग्राम। उससे ज्यादा कर सकते हो, बट दैट इज व्हाट योर मिनिमम। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास डिस्कवरी हो गया तो तुम ज्यादा से ज्यादा वेल ड्रिल करोगे। हाँ, तो दैट इज व्हाट मिनिमम वर्क प्रोग्राम दैट यू हैव टू कंप्लीट, क्योंकि वही उसी पर तुम्हें बिड है। अगर कंप्लीट नहीं करोगे, अगर वॉकआउट कर जाओगे, वॉक अवे, तो वॉक अवे ऑप्शन भी होता है। ओके, एंड वॉक अवे ऑप्शन के लिए हो सकता है कि किसी पेनल्टी हो, किसी में पेनल्टी ना हो। ओके, क्योंकि अगर वॉक अवे करोगे तो दूसरे को ब्लॉक मिला रहता है, वो कुछ करता, तुम ब्लॉक लेकर भी कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये वॉक अवे ऑप्शन जो है वो ठीक है। सो लेट अस लुक एट दैट, ग्रेजुअली वी विल सी ऑल दिस। हाँ, ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे कि तुम लोग बहुत लोग जो है स्टूडेंट चैप्टर का बहुत सारा ऑफिस बेयरर्स हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं कि कुछ भी काम नहीं करते हैं और चाहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। कुछ लोग जो है बहुत काम करते हैं। ओके, सो टाइमलाइन जो है 3 इयर्स फॉर तुम्हारा ऑनलाइन एंड 4 years for deep water and ultra deep water. There will be no bar on additional exploration work which is beyond MWP, and that is quite obvious कि अगर MWP तुम्हारा से उससे ज्यादा अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ब्लॉक तुम्हारे पास है।
all other provisions will be similar to that of existing hydrocarbon. तो ये जो है चेंजेस जो हुए ये दैट इज इन 2019 में ये गैजेट नोटिफिकेशन आया, 2019 का। और HELP कब से शुरू हुआ तुम्हारा 2016 से। हाँ, तो अब देखो कुछ फिजिकल टर्म्स देखो, फिजिकल एंड कंट्रेक्चुअल टर्म्स इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 बेसिस के हैं यहाँ। हाँ? ये कैटेगरी 1 का तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो इसमें क्या है, द एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 विल बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल, ओके, बेस्ड exclusively on exploration work program। अब ये जो है exploration work program, all statutory levies including royalty will be paid by the contract। ठीक है, there will be no revenue or production sharing contract with government। ओके, बहुत ही क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट या रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 2 एंड कैटेगरी 3 ब्लॉक है, इसमें तो तुम्हारा प्रोविडेंट रिजर्व कैटेगरी 1 में है ना, प्रोड्यूसिंग बेसिस। हाँ, oh, the question is why out of the 26 sedimentary basins of India so many are yet unexplored? Is that due to any restriction in policies? जब मैं तुम लोगों को पढ़ाया था एक्सप्लोरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग, उसमें मैंने सारे बेसिन्स का काम करने को दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे करना ये चाहिए कि सबको एक दूसरे का प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए, जो कि हुआ नहीं था। सो नेक्स्ट टाइम आई विल कीप इन माइंड, क्योंकि वैसे में क्या होगा, देन यू कम टू नो अबाउट द बेसिन्स कि क्यों प्रॉब्लम है, उसका हिस्ट्री क्या है, जियोलॉजिकल उसका जियोलॉजी कैसा है, देन ओनली यू कैन अप्रिशिएट कि 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स में ओनली देयर आर फ्यू सेडिमेंट्री बेसिन्स व्हिच हैव बीन एक्सप्लोर्ड, नॉट अदर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ड्रिल तो सब जगह किए हुए हैं, लेकिन उस ड्रिलिंग में कहीं लगता है कि ओके प्रॉब्ली दिस इज नॉट दैट मच प्रोस्पेक्टिव, तो उसको छोड़ दिया। अगर कहीं कोई तुम्हारा वेरी ओल्ड है, प्रीकैम्बियन बेसिन है, क्यों उसमें एक्सप्लोरेशन करेगा, उसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। सो आउट ऑफ दिस 26 sedimentary basins, one has to really understand their geology so that they can make this kind of statement whether or they can understand which basin they should go for। okay, so इसमें देखो, इसमें क्लियर है कि there will be no revenue और प्रोडक्शन शेयरिंग विथ गवर्नमेंट, इसमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कैटेगरी 2 एंड 3 है। लेकिन इन केस ऑफ विंडफॉल, विंडफॉल गेन क्या है, विंडफॉल गेन वही HRP वाला है कि अगर मान लो कि तुम्हें मिल गया ब्लॉक और तुम्हें लगा कि और ये कैटेगरी 2 में है और तुमने ड्रिल किया और प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो गवर्नमेंट के साथ है नहीं, तो जितना भी मिलेगा वो तुम्हारा है कि नहीं। लेकिन अगर ये विंडफॉल गेन है, दैट मीन्स लेट्स से $7 million अ डे, अगर तुम्हारा उससे ज्यादा का ये है HRP जो है, तो उसके बाद गवर्नमेंट कहेगी ओके नो 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 नो, यू स्टार्ट गिविंग मी सम। ओके, देखो यहाँ पर विंडफॉल का डेफिनेशन क्या है, अ विंडफॉल गेन accrues to the contractor when revenue net of royalty from the contract area exceeds 2.5 billion in a financial year। okay, 2.5 billion in a financial year, इसका मतलब क्या हो गया है कि अगर उससे ज्यादा का अगर तुम्हारा रेवेन्यू हो गया उसमें, okay? अगर उससे ज्यादा का रेवेन्यू हो गया, 2.5 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू हो गया, तब जो है उसको जो है गवर्नमेंट करेगी तो विंडफॉल गेन। ओके, तब जो है सच रेवेन्यूज विल बी शेयर विद द गवर्नमेंट एज बिलो। किस तरह का,
more than 2.5 billion but less than 5 billion, 10% of revenue exceeding 2.5 billion. अगर 2.5 से जितना ज्यादा होगा उस पर 10% केवल गवर्नमेंट लेगी. ये तो बड़ा ही अट्रैक्टिव टर्म है. अगर इफ यू हैव कैटेगरी 2 बेसिन, उसमें अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, दिस इज रियली गुड डील, इजंट इट? कैटेगरी 2 बेसिन है, अगर तुम्हें लगता है कि यू आर स्मार्ट इनफ, यू कैन प्रोड्यूस समथिंग, तो गवर्नमेंट से वो ब्लॉक ले लो और अपना ड्रिल करो, और ड्रिल करने के बाद अगर कुछ भी मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी तुम्हारा लॉस है, बट अगर मिल गया तो इट्स योर गेन. बट if that gain goes above 2.5 billion in a year, तब उसके बाद गवर्नमेंट करेगी ओके, उससे जितना ऊपर है वो उसका 10% मुझे दे देना. लेकिन अगर उस 5 बिलियन से ज्यादा है, अप टू 10 बिलियन, तब गवर्नमेंट करे ओके, तो मुझे जो है 30% दे देना. अगर उससे भी 10 बिलियन से भी ऊपर है, तब गवर्नमेंट ने कहा कि ओके 50% कर देना. So that is what you have. Okay. So this is quite, lucrative terms and conditions for any oil and gas company to see if they can work on category 2 and category 3 basin for production purposes. Of course, ये फाइनेंस का दिखा देने से ऑयल तो मिल नहीं जाएगा. So one really has to explore for it, and then do some geological and geophysical studies to really understand whether you can produce anything out of those areas, category 2 and category 3 basins. उसके बाद जो है, there are some other contractual terms. Royalty rates as applicable under HELP contractual regime will apply. अभी HELP का हम लोग देखेंगे. To expedite production, concessional royalty will be applicable if production is commenced within 4 years. देखो within 4 years में बहुत अच्छा है कि अगर उससे, क्योंकि this is kind of incentive it gives you, कि अगर जो है तुम 4 साल से पहले ही कर लिए और प्रोडक्शन पे कर दिए, तो गवर्नमेंट इज सेइंग ठीक है, कंसेशनल रेट में ही तुम ये होगा, तुमको रॉयल्टी देना होगा, पूरा मत दो. एंड 5 years फॉर डीप वाटर. ओके, तो 4 years एंड 5 years इस तरह से करके रखा है गवर्नमेंट ने. Royalty rates and basin category wise concessional royalty rates are in Annex 2. In case commercial production is not commenced in the above prescribed time period, then royalty at existing rate will be applicable. तो ये अच्छा है, ये जो है इंसेंटिव लोगों को बोलता है कि अच्छा भाई, if I start producing early, तो हमें कंसेशनल रेट मिल जाएगा. इससे जो है they expedite their exploration and production process, exploration and development, production पता नहीं. The contractor will have full marketing and pricing freedom. ये हम लोगों ने बात कर लिया. The contractor will have liberal freedom to transfer or exit the block provided work program has been adhered to. अगर ये है कि अगर वर्क प्रोग्राम जो उसने दिया था, मिनिमम वर्क प्रोग्राम, अगर उसने पूरा किया है, तो अगर पूरा कर लिया और उसके बाद जो चाहता है कि ठीक है कुछ मिलेगा नहीं, एंड दे वांट टू एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक, ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज नो प्रॉब्लम इन दैट वन, क्योंकि उस मिनिमम वर्क प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया. 3 साल का जो भी उसने दिया था कि 3 साल में मैं ये करूंगा, अगर वो कर लिया, फिर भी कंपनी को लग रहा है कि वेल देयर इज नथिंग, तो वांट्स टू एग्जिट, तो जा सकता है. There will be adequate flexibility to revise the field development plan. Okay,
ये फील्ड डेवलपमेंट प्लान जो है कैसे होगा वो बाद में चेंज कर सकते हैं विथ कंकरेंस ऑफ DGH. तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन ही जो है that they are going to say whether this program that you are field development plan that you are giving, whether it's a good one or not. Empowered Committee of Secretaries, Marketing and Pricing Reforms for Natural Gas. ये तो तुम लोग को मैं थोड़ा बहुत तो बताया भी था. ओके, गैस के बारे में, स्पेशली गैस का जो है. So in case of existing contracts, marketing and pricing freedom to sell on arm's length basis through competitive bidding will be permitted to those new gas discoveries whose FDP will be approved for the first time after the date of issuance of this policy. In case of nomination fields, अब ये देखो nomination fields कौन सा है, जो कि गवर्नमेंट जो है अपने कंपनीज को NOCs मतलब नेशनल ऑयल कंपनीज को दे देती है कि अच्छा भाई आई नॉमिनेट दिस ब्लॉक टू यू, टू ONGC, टू OIL, टू IOCL, you do something about these blocks. Okay, so कुछ वो नॉमिनेशन बेसिस पे देते हैं. ठीक है. So in case of nomination fields given to NOCs, national oil companies, marketing and pricing freedom will be provided subject to the condition that FDP for new gas discovery is approved by DGH. ठीक है. अब ये जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस 2014 में आया था, दैट यू ऑलरेडी नो प्रॉब्ली, जानते हो ना कि नहीं पता है. गैस प्राइसिंग का हमने तो कहा था बहुत पहले भी कि तुम लोग थोड़ा काम करो. रंगराजन कमेटी रिपोर्ट, रंगराजन कमेटी रिपोर्ट देखी होगी नहीं तुम लोग? नहीं देखे हो तो अच्छी बात नहीं है. रंगराजन के ओके, एक ने कहा यस, तो ठीक है, दैट्स गुड. Now, then there is an empowered coordination committee. An empowered coordination committee under this cabinet secretary comprising this, all this, okay, you can read it fast. Dispute resolution mechanism, okay. तो ये भी है. Now, अभी जो हमने कहा 26 कैटेगरी ऑफ बेसिन, 26 सेडिमेंट्री बेसिन देखो, इसमें कौन कौन किधर है. कैटेगरी 1 में कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफशोर, असम शेल, राजस्थान कावेरी, असम अराकान फोल्ड बेल्ट, खाम्बे बेसिन, ये तो सब, ये तो तुम लोग जानते हो, एंड दे आर ऑल प्रोड्यूसिंग बेसिन. कैटेगरी 2 में देखो सौराष्ट्र बेसिन, कच्छ बेसिन, विंध्यन महानदी, अंडमान निकोबार. देखो विंध्यन बेसिन जो है, इट हैज स्टार्टेड सम डिस्कवरी हुआ है, एंड सो यू नो who knows when it's going to be put in category 1 basin. That depends on the commerciality. Category 3 देखो केरला कोंकण, बंगाल पूर्णिया, गंगा पंजाब. इधर तो कुछ जो है तुम्हारा चांस है. बंगाल पूर्णिया और बंगाल बेसिन टिपिकली, जहाँ की अभी अशोकनगर में एक वेल ड्रिल हुआ था, याद है? अशोकनगर. तो अब ये जो बंगाल बेसिन है, वेदर दैट हैज बीन transferred to category 2 or 1, I do not know. ठीक है. So we'll have to see if there is any development on that aspect. देखो अब डेक्कन सीनेक्लाइज जो है, it's an important basin, but the problem there is that in Deccan basin it's those sediments below basalt, okay, below basalt,
बेसॉल्ट कब हुआ था? बेसॉल्ट आया था, द डेक्कन बेसॉल्ट, that was in KT boundary, right? That means Cretaceous tertiary boundary, that was about 65 million years ago. और इसके पहले जो था, then you had that Jurassic sediments below basalt. Jurassic sediments below basalt is the kind of target for this Deccan synclinals. Okay, so yeah. Now here is annexure 2 where you have all these different rates. तो देखो रॉयल्टी रेट्स का ये क्रूड ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए देखो बेसिन कैटेगरी, ऑनलाइन शैलो, डीप वाटर, अल्ट्रा डीप वाटर, ऑनलाइन शैलो, डीप वाटर, अल्ट्रा डीप वाटर. तो देखो कैसे एग्जिस्टिंग रॉयल्टी रेट्स अंडर हेल्प. तो एग्जिस्टिंग ऑनलाइन में क्या था? 12.5. शैलो वाटर देखो 7.5. अब देखो डीप वाटर 0 आफ्टर 7 years. ओके 5. फर्स्ट 7 years तक मतलब कोई टैक्स नहीं है. अगर तुम्हें जो है, इफ यू लेट्स से यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन 4 years, तो तुम्हें 3 साल तक तो कोई रॉयल्टी ही नहीं देना है, प्रोड्यूस करते रहो. हाँ, और आफ्टर 7 years देन यू गिव 5% रॉयल्टी. ओके, उसी तरह से व्हेन यू आर गोइंग फॉर अल्ट्रा डीप क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग टू डू, राइट? And so in that case, तुम्हारा after 7 years only 2%, nothing. So cheap. Huh? And similarly, that is also applicable for gas. Gas में तो ऑनलाइन में और भी कम हो गया, यहाँ पर देखो. And then concessional rates for early production in category 1 basin देखो. अगर early production कर रहे हो तो ये देखो, ठीक है? Concessional rates for early production in category 2 basins, okay, and category 3 basins, ये है तुम्हारा concession, okay. So that is what you have this ये आया था 2019 में, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया. ओके, so here I have some अच्छा और 2-3 मिनट है. Let's try to finish this quick. HELP was announced in March 2016, जो कि अभी हमने दिखाया, and with all these benefits. 3 rounds of OLP have been carried out under help. अब ये देखना है कि अभी लेटेस्ट क्या है. probably 4th का चल रहा है. ओके, so these many 87 blocks, these have been awarded already. गवर्नमेंट नोटिफाइड फॉर ये अभी हम लोगों ने देखा जो नोटिफिकेशन था पॉलिसी रिफॉर्म्स का, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना. सो दैट वाज फ्रॉम OLP bid round 4 onwards. ये जो नया वाला है. हाँ, जो नोटिफिकेशन अभी हम लोग पढ़े थे, गैजेटेड नोटिफिकेशन. हाँ, so that is what February 28, 2019 से ये एप्लीकेट हो रहा है. Changes related to expression of interest, EOI. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, दे आर डिफरेंट विंडोज. ओके, टाइम विंडोज, जिसमें कि यू लुक फॉर योर इन दोज टाइम विंडोज यू अप्लाई. उसके पहले अपना देखो कि हम ये कर रहे हैं. हाँ, और उसके बाद जो है इस टाइम विंडो में अपना जब सबमिट किए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, then government will come up with they will combine all those blocks and then they start for bidding. Okay,
लेकिन EOI के लिए जो है there is some fee 75,000 rupees ऑप्शंस ऑफ रेकोनेसा कॉन्ट्रैक्ट है। तो रेकोनेसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, रेकोनेसा मतलब सर्वेइंग टाइप का है, रेकोनेसा कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं है। सेपरेट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आर टू बी सबमिटेड फॉर नॉन कंटिन्यूअस ब्लॉक्स और डिफरेंट बेसिस। तो ये है, एंड सो आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ एंड विल स्टार्ट टुमारो। ठीक है, चलो बाय।